Productivity is a national need, productivity is a domestic need, and productivity is an industrial need. And we are trying to understand what productivity is. उत्पादकता कशाला म्हणतो आपण? गुणवत्ता सगळ्यांना माहिती आहे. Quality everybody knows, but what is productivity? Productivity to me is the ratio between output and input. It is output to input, simple ratio. And output is what you produce, simple. Yes or no? Yes. Perfect. Output is what you produce, and input is what you input is the resources. Simple. And which all are the resources? Perfect. Man, machine, material, method, money, and time. 6 resources. Basic resources. Input is a bundle of resources, whereas the output is what you produce. Simple, very simple definition. बराबर ना? And we want to have this company very productive. Yes or no? Yes. Everybody we fight for productivity. Now this ratio output to input. Output not in our hands. We are told by the management is to produce this much, matter ends, and then you keep on producing. But resource is used by you. Resources are used by you, not the management even. हम यूज करते हैं नहीं रिसोर्सेस? मैन पावर हमारा है, मशीन, मेथड, मनी, मटेरियल, टाइम वी यूज. और ये किस लिए यूज करते हैं? हम कैसा काम करते हैं? वी वांट द कंपनी टू ग्रो. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वी वांट द कंपनी टू ग्रो. कंपनी कैन नॉट ग्रो अनलेस एन इंडिविजुअल ग्रोज. यू एग्री और नॉट? इंडिविजुअली हम लोगों ने ग्रो होना चाहिए कि नहीं? That's the very reason your company has organized this particular program, and they are giving you this kind of a training. They are imparting this training to you so that you should grow in terms of attitude, knowledge, and skill. And company cannot grow unless the employee grows. Matter is company should grow. Yes or no? Yes. And who makes the company grow? We only. So we are the basic, very fantastic resource, and we have in our hands remaining 5 resources to use productive. 6 resources, out of which man means we people make the company grow. This resource, we people make the company grow. And how do we do that? By utilizing the remaining 5 resources productively. राइट? यहां तो बिल्कुल बराबर, फर्स्ट क्लास. नाउ अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी की बात पहले करें, या ये दिन भर चलेगा सिलसिला कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, क्यों बढ़ाई जाए. द पॉइंट इज, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ नेशनल कॉज, इट्स अ डोमेस्टिक कॉज, एंड इट्स एन इंडस्ट्रियल कॉज. रिसोर्सेस यदि हमें प्रोडक्टिवली यूज करने हैं, रिसोर्सेस तो लगेंगे ही, बिना रिसोर्सेस से कुछ बनेगा तो नहीं. लेकिन रिसोर्स यूज करते समय जो भी लॉसेस हमारे हो रहे हैं, दे आर इन आवर हैंड्स टू आइडेंटिफाई एंड eliminate. Yes or no? There are certain wastes they take place, and they are in our hands to identify and eliminate. That's the very theme of this particular training program, is to utilize the resources productively. अभी थोड़ा resources में मैं जरा मैन पावर की बात करता हूँ कि आई एम यूटिलाइजिंग माई सेल्फ एज अ मैन, and then I should be working productively. आप थोड़ा सा सोचिए, जहाँ जहाँ पॉसिबल है ये करने का प्रयास करिए.